Good afternoon, students, friends, and colleagues. You're most welcome to this session, which talks about understanding self. Today, I, Dr. Ritu Sharma, from Assistant Professor, Central University of Haryana, Department of Psychology, welcome you to this session. First and the foremost, I would like to thank our respected Vice Chancellor of Central University of Haryana to allow me to conduct this session. At the same time, I also would like to thank Dr. Ashok Sharma for organizing such a wonderful lecture series online for students and for uh, other viewers. Uh, it's very important for us to understand self. I think it's very easy to understand others, and we quickly jump to conclusions that कोई ऐसा लग रहा है, किसी ने ये पहना हुआ है, and we generally do that. So if अगर आज सुबह से बात करें तो शायद आप बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, or if in case you go out, you meet a lot of people. और हर किसी को देख के आपके दिमाग में एक जजमेंट आ जाता है कि ओ यू नो उसने ये पहना हुआ था, द पर्सन वाज वेयरिंग दिस, और द पर्सन वाज टॉकिंग लाइक दिस, सो द पर्सन इज लाइक दैट. Probably you might just have certain judgments about me as well. बहुत आसान होता है to give remarks to other people, to judge other people, but we fall short when it's about understanding ourselves. And in current times, when we are under lockdown, a lot of us are so frustrated, puzzled, that we don't know half the time what is the emotion that we are experiencing, or what exactly are we talking about when we are talking to people. We tend to lose our speech, we tend to lose control over our words, and we tend to say whatever. This all is as a result because you are not able to understand yourself. As a psychologist, I feel it is very, very, very important before you understand anything at all in the world, be it your subject, be it any other thing, you need to first understand yourself. With this, I will start my session. Uh, there are certain important things of self which you totally need to understand. What exactly is self when I say? Uh, Self is nothing but it is concerned with the totality of us. It includes our body, sense of identity, our reputation, and so on. सेल्फ की कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे. अगर मैं बोलूँ अपने आप को डिफाइन कीजिए, सो आई थिंक यू विल फील वेरी डिफिकल्ट फॉर at this moment to define yourself. Or if in case I ask you, tell me three words that explains you the best. Give me three adjectives that explains you the best. You can write it in the comment. I will be able to see that. तीन शब्द अपने बारे में बोलिए. It is so difficult to find these three words when you have to talk about yourself. और अभी मैं बोलूं तीन शब्द आप किसी और के बारे में बोलिए. It is very easy. It's very simple. It is very complex to be able to define yourself, to be able to understand yourself. So there are certain components which will help you define and understand yourself, जो कि आज मैं बात करूंगी जिनके बारे में. First is self identity. What is your identity? Second is self concept. Then I'll be talking about something which is self awareness. I will be talking about self esteem, attitude, and emotional intelligence. These all aspects will enable you to understand yourself in today's time. सबसे पहली चीज is self identity. When I say self identity, what comes to your mind? Self identity, you might just be struck with that my name is Dr. Ritu Sharma. So, Ritu Sharma is probably my identity. Yes, of course, your name is your identity, but your self identity is more than the name and the surname that you have got. Where do I belong to? That's not my self identity exactly. ये सब पार्ट है आपकी सेल्फ आइडेंटिटी का. आप क्या क्रिएट करते हैं लाइफ में, आपने क्या किया है लाइफ में, आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आप कैसे दिखते हैं, क्या एथनिसिटी है आपकी, कैसी हैबिट्स, कैसी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, आप कैसे लोगों से बात करते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर इंटरेस्ट, and what exactly do you do. This all defines something which is called as your self identity. हम जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. So it is an important aspect. First, you need to understand
what exactly is defining your identity. बहुत सारे लोग अपनी आइडेंटिटी जनरली अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंडफादर्स या अपने लोकेलिटी या अपनी कम्युनिटी को लेके चलते हैं. That is also important. But you have to understand as an individual what is your identity. Uh, then I'll move on to the second concept, which I said was self concept. Self concept क्या चीज है? Self concept is very simply what do you think about yourself? When I said explain three words or give me three adjectives about yourself, I think you found it very difficult to really give that. Individual's belief about himself or herself, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? There are some people who think very high of themselves. Thinking too high or too low is not good. You need to think positive about yourself. अगर आप अपने आप को पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं, रियलिस्टिकली पॉजिटिवली इवैल्यूएट करते हैं, आई एम यूजिंग द टर्म रियलिस्टिकली हियर बिकॉज पॉजिटिव इवैल्यूएशन डज नॉट मीन दैट you create a fantasy for yourself, as in you create an image which is not exactly yours, you create a concept of yourself which is not exactly yours. आप अपने बारे में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बना के रखिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, how to use your strengths and when to use your strengths. You should appreciate your strengths. At the same time, you should work on your weaknesses. But at the same time, there's many of us who look at weaknesses more than we look at our strengths. So if in case I ask you to tell me, give me two strengths of yours and two weaknesses, I think there are some number of people who will say that I have more weaknesses than I have strengths, ma'am. जब मैं अपने बारे में काउंट करना शुरू करता हूँ तो शायद मैं अपनी वीकनेसेस ज्यादा बता सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ कम बता सकता हूँ. तो आपसे मैं ये बोलूंगी, प्लीज क्रिएट अ चार्ट फॉर योरसेल्फ. आप जहां भी बैठते हैं, जहां पे भी आपका रीडिंग रूम है, विच एवर प्लेस यू हैव, और क्रिएट अ डायरी फॉर योर सेल्फ. अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, उस कॉम्प्लीमेंट को लेके चलिए, उस कॉम्प्लीमेंट को एनालाइज कीजिए. मैं ये नहीं कहती कि गेट ड्राउन्ड विद दैट कॉम्प्लीमेंट, बट अंडरस्टैंड कि वो आपकी क्वालिटी है कि नहीं. धीरे धीरे विद वर्क दैट यू डू, विद मोर यू एक्सपेरिमेंट, आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर. ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस विल हेल्प यू बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. क्योंकि आपको एक सेल्फ कॉन्सेप्ट जो पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को जानें. नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जिन लोगों का होता है, वो अक्सर अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं. वो सोचते हैं कि प्रोबेबली दे आर नॉट गुड इनफ, वो दिखने में अच्छे नहीं हैं, वो अपने आप को कैरी अच्छे से नहीं कर पाते, वो लोगों से बात अच्छे से नहीं कर पाते. सो दिस इज नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट. नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होना भी अच्छी बात नहीं है. बहुत ज्यादा हाई पॉजिटिव, जिसे मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा थिंकिंग वेरी हाई ऑफ यू इज ऑल्सो नॉट गुड. एट द सेम टाइम थिंकिंग वेरी लो ऑफ यू इज ऑल्सो नॉट गुड. रियलिस्टिकली पॉजिटिव आप जितना रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना यू विल बी बेटर इन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशंस एंड योरसेल्फ. आप कैसे उन सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं. तो अपने बारे में चीजें जानिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें रिजेक्ट मत कीजिए. आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु हैव बॉडी इमेज इश्यूज. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, कुछ लोगों को लगता है वो बहुत मोटे हैं, and they don't like themselves as that. They hit the gym, they go to these dietitians and they want to change their entire lifestyle. I think अगर आप chubby हैं, अगर आप में fat है, अगर आप थोड़े से fat looking हैं, but you are comfortable with your body and you're healthy, I think you're perfectly fine. There's no way you should hit the gym just to reduce weight. Koi beauty is not defined in thin or fat or anything. You should be comfortable with your body. There are certain people who have body image issues. So that is again something which is related to this. Aapko, you should be comfortable with whatever and howsoever your body is, but maintain to be healthy. At the same time, there are some people who might just feel that, uh, they are just wonderful and amazing. उनके जैसा कोई है ही नहीं. Again, this is something thinking too high of you. Please understand, there are many people who are wonderful, who are beautiful, who are gorgeous, and they carry themselves very well, and they can be better than you as well. So try and accept
whosoever is good around. That is another important thing and a key to happiness also. There's something which is called as self confidence. Again, a very important component when we talk about understanding ourselves. Self confidence is people who feel they have the ability to deal with problems or capability to do things. There are many times when you're asked that let's do a mathematics question, or if in case today I tell you let's combine and we'll solve a mathematical question. I think half of you will shun away. आधे लोग भाग जाएंगे कि बिकॉज इट इज मैथमेटिक्स इट इज टू डू विद नंबर्स पता नहीं ये क्या करा लें हमसे क्या मैथमेटिक्स करा लें वी आर नॉट इंटरेस्टेड दिस इज समथिंग विच इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं बहुत बार सेशंस में स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आप में से कितने लोग गा सकते हैं प्लीज आस्क योर सेल्फ व्हेन यू आर सिटिंग एट होम आप में से कितने लोग गा सकते हैं आप में से कितने लोग बाइसिकल राइड कर सकते हैं आप में से कितने लोग बाइक राइड कर सकते हैं आप में से कितने लोग कार ड्राइविंग कर सकते हैं आप में से कितने लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल आस्क यू आप में से कितने लोग चल सकते हैं आप में से कितने लोग बाहर जा सकते हैं all of us can do all the things that I've mentioned till now. बट आई एम श्योर जब मैं पूछ रही थी आप में से कितने लोग गा सकते हैं मेनी ऑफ यू माइट जस्ट से नहीं मैं नहीं गा सकता आप गा सकते हैं बट यू हैव नेवर पेड अटेंशन टू दैट अब हर किसी की आवाज इफ इन केस आई लुक एट सिंगर्स इज नॉट द सेम सोनू निगम जी की आवाज इज नॉट सेम एज जगजीत सिंह नॉट एट ऑल दोनों की आवाज बहुत डिफरेंट है सबकी आवाज ईला अरुण फॉर दैट मैटर इज वेरी डिफरेंट व्हेन वी से ब्रिटनी स्पीयर्स उनकी आवाज बहुत अलग है तो हर किसी की आवाज डिफरेंट है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड प्रोबेबली इन दैट थिंग डजंट मीन यू कांट डू इट you can do it people practice hard and harder and that's how they reach where they are वो इंटरेस्ट लेते हैं एक चीज में इन्वेस्ट करते हैं और वो करने के बाद वो उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे वो हैं we feel it's very easy to reach at any stage we feel it's very easy to become an actor and a singer a cricketer it goes a lot of hard work into doing all this and we have to understand this so you have to first analyze जैसे मैंने पहले बोला कि आपको सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स पता होने चाहिए वीकनेसेस पता होने चाहिए किसी भी चीज को ना बोलने से पहले आई वुड से give it a try so from now onwards give it a try when I say give it a try it means you will give it a try to healthy and positive things अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके ड्रग अब्यूज सिगरेट स्मोकिंग या अल्कोहल शुरू करते हैं या कहते हैं कि चार फ्रेंड्स बैठे हुए हैं बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू ड्रिंक देन इट इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस उस इंसान में मैं मानूंगी when somebody is consuming alcohol that person can sit there yet not have the alcohol so that is self confidence self confidence enables you to do what you exactly want to do it doesn't makes you get into things which you don't want to do or which you feel are not right self confidence gets through you can come out of negativity people talk negative about you they say you can't do it you don't have to listen to that you have to understand yourself आपकी capacity है आपके लिए अच्छा है या नहीं है and then you can come out of it you can come out of critics there's so many times people feel disheartened that किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया and I'm feeling very bad about it please understand what is this celebrities go through I think every day they are linked with somebody or the other every day they are talked about negative in the social media and you have to understand this that कोई भी ऐसे negative आपके बारे में बोल दे you have to first understand whether that is true or not मैं ये नहीं कहती आप उस चीज को लीजिए ही नहीं please pick up whatever the person has said analyze whether that is true about yourself or not if you find it to be true, improve yourself. If you don't find it true, please ignore it. There's something which is called as doubt. When I said I was asking you certain questions and I was asking you whether you can sing,
You can dance, play badminton, ride a bike or a bicycle. Doubt is the question that made you say no and will make you say no in the future also. जब भी आप अपने ऊपर डाउट करेंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर पाएंगे. If I don't get up and come out of my bed, I won't be able to do anything. And trust me, every morning आप इस डाउट से बाहर आते हैं कि आप उठ सकते हैं. If on a Sunday you want to sleep, I think you can sleep the entire day. लेकिन अगर आप अपने आप को उस डाउट से बाहर निकालें कि नहीं मुझे उठ के कुछ करना है, then even on a Sunday you can wake up at 7, get ready at 8 and start working on your own things. Next is fear. Fear is again something which is good and which is bad also. Fear of realistic things is very good, but fearing of everything is bad. So there are certain things that you should not be fearful of. You have to understand whether that fear is something which is going to benefit you or which is going to make you lose. अब मैं ये नहीं कहती कि आप इतने fearless हो जाइए कि जंगल में शेर के सामने कूद जाइए और बोलिए कि मैं उससे लड़ना चाहता हूँ. Don't be that fearless, but at the same time be realistic that the lion or the tiger can harm you. But at the same time, fear of trying out new things, probably आजकल आपका मन कर रहा है कि you should start painting, you should start working on certain things. Please come out of the fear that you will not be able to do it or you will not be able to be successful in it. हर चीज हम success के लिए और output के लिए नहीं करते हैं. There are certain things which we like and thus we do it. So please go ahead and come out of this fearfulness in your life. The next very important thing that I'm going to talk about is self image. Now self image, अब थोड़ा सा शायद self concept से हम बाहर आएंगे. Self concept is how do you think you are? What is your belief system about you yourself? Self image is something कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं आपके according. That means मैं अगर मैं रोड पे जा रही हूँ या मैं किसी से मिल रही हूँ और मैं क्या सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है. दैट इज माई सेल्फ इमेज. कि मेरे मम्मी पापा या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग्स मुझे कैसे देखते हैं. दैट इज माई सेल्फ इमेज. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अगेन हैव समथिंग विच इज अ वेरी रियलिस्टिक सेल्फ इमेज. आपको कभी भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव या बुरी सेल्फ इमेज बनाने की जरूरत नहीं है. डिफरेंट रोल्स दैट यू आर प्लेइंग इन लाइफ एंड एवरी रोल is something which is very important. But please build a positive self image is what I will say here. I think there's some problem with the video. हेलो. आई थिंक कोई एरर आ गया है. एंड लाइव शो लाइव वीडियो करके करूं.